So today's topic is pyrimidine biosynthesis कि pyrimidines की कैसे biosynthesis होती है ओके सो pyrimidines में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास आ जाता है साइटोसिन यूरासिल एंड थायमीन सी यू एंड टी ये आरएनए में होता है ये डीएनए में होता है और ये दोनों में ही होते हैं साइटोसिन इसकी जो बैकबोन होती है pyrimidines की वो ऐसी बैकबोन होती है एक नाइट्रोजन यहाँ होता है एक नाइट्रोजन यहाँ होता है एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है ओके इतना जो बैकबोन का हिस्सा होता है ये आता है एस्पार्टिक एसिड से ये आता है CO2 से और ये आता है ग्लूटामीन से ओके अब हम इसकी बायोसिंथेसिस देखते हैं कि कैसे इसकी बायोसिंथेसिस होती है तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट आयंस ग्लूटामीन के साथ जुड़ते हैं ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये चेंज हो जाते हैं कार्बोमोइल फॉस्फेट में कार्बोमोइल फॉस्फेट चेंज होता है कार्बोमोइल एस्पार्टेट में कार्बोमोइल एस्पार्टेट चेंज होता है डाईहाइड्रो ओरोटेट में ये चेंज होता है ओरोटेट में ये चेंज होता है OMP में ये चेंज होता है UMP में UMP चेंज होता है UDP में UDP चेंज होता है UTP में एंड UTP चेंज होता है CTP में इसको करवाने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं एंड वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं जैसे कि यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये जो रिएक्शन है साइटोप्लाज्म में चल रही है यहाँ पे जो आता है वो होता है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज यहाँ पे आता है डाई हाइड्रो ओरोटेज यहाँ पे आता है डाई हाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो आता है OPRTase that is orotate phosphoribosyltransferase transferase ओके यहाँ पे आता है OMP डीकार्बोक्सिलेज उसके बाद एंजाइम आता है काइनेज again kinase and then it is cytidine synthase ओके अब कहाँ कहाँ पे ATP एंड NADH वगैरह यूज होता है वो देखते हैं जैसे यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है OPT OP आर्टेज है तो इसको PRPP चाहिए ओके डी कार्बोक्सिलेज है तो यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है काइनेज है तो यहाँ पे ATP गिवन हो रहा है जो ADP में चेंज हो रहा है यहाँ पे भी अगेन काइनेज है तो ATP गिवन है एंड ADP यूज हो रहा है यहाँ पे भी सिंथेसिस हो रही है तो ATP इज यूज्ड अप एंड ATP इज गिवन आउट ओके यहाँ पे
अगेन ग्लूटामीन दिया जाता है और वो ग्लूटामीन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। ठीक है। कुछ एंजाइम्स होते हैं या कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इनको इनहिबिट करके रखते हैं। व्हाट आर दी सब्सटेंसेस? इसको इनहिबिट करके रखता है यूटीपी और इसको एक्टिवेट करता है पीआरपीपी एंजाइम। इसको इनहिबिट करता है सीटीपी, इसको एक्टिवेट करता है एटीपी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ, ये क्या था हमारा, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ pyrimidines। ओके, अभी हमारे पास यूडीपी तो बन चुका है, लेकिन अगर हमें इस यूडीपी से डी यूडीपी बनाना है तो वो कैसे बनेगा? यूडीपी था, इस यूडीपी से हमें डी यूडीपी बनाना है, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है दैट इज राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ये यूज करता है थायोरिडॉक्सिन को। थायोरिडॉक्सिन जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट कर देता है थायोरिडॉक्सिन के ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। दैट मीन्स कि यहाँ पे एस एच होता है और यहाँ पे एस का डबल बॉन्ड बन जाता है। इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए FADH2 कन्वर्ट होते हैं FADH में, FAD में, एंड इसको वापस से रीजनरेट करने के लिए there is NADPH which is converting into NADP plus H plus. Okay, so this is how the thiouredoxin is reduced, in the reduced form is changed to the thiouredoxin in the oxidized form. Okay, so this is the formation of DUDP. Now from this DUDP or DUMP, how can we form the DTMP? It is with the help of enzyme thymidylate synthase. Okay, this enzyme thymidylate synthase, it converts N5 N10 methyl tetrahydrofolate to dihydrofolate, and after converting back into this reaction there is an enzyme dihydrofolate reductase. Okay, this enzyme is inhibited by a drug called as methotrexate. Methotrexate. Okay, the disease which is caused by the defect in the pyrimidine biosynthesis is orotic aciduria. Orotic aciduria, due to the defect, this disease is caused due to the defect in the enzyme that is carbamoyl phosphate synthase 2 and aspartate transcarbamylase, that is ATC enzyme, that is causing a disease orotic acid urea, in which there is accumulation of orotic acid.
it leads to the accumulation of orotic acid and formation of crystals which block the urine. Okay, so there is one correction over here. This enzyme is not CPS2. The enzymes over here are OPTR, OPRTase and only OP and OMP decarboxylase. Okay, so let me summarize this for you that pyrimidine biosynthesis pyrimidine are having the cytosine, uracil, and thymine. The backbone is composed of aspartic acid, glutamine, and CO2. In the first step, bicarbonate and glutamine are combined together and they form carbamoyl phosphate. In the reaction, the enzyme used is carbamoyl phosphate synthetase 2, which is converted to carbamoyl aspartate with the help of enzyme aspartate transcarbamylase. This carbamoyl aspartate is converted into dihydroorotate with the help of enzyme dihydroorotase. This dihydroorotate is converted into orotate with the help of dihydroorotate dehydrogenase. This orotate is converted into OMP with the help of OPRTase, and OMP is converted into UMP with the help of OMP decarboxylase. UMP is converted into UDP by kinase, UDP is converted into UTP by kinase, and UTP is converted into CTP by cytidine synthase. Okay, if we have to convert the UMP into DUDP, which is found in the DNA, deoxy form, okay, and or UMP into DUDP or UDP into DUDP, we will need an enzyme that is ribonucleotide reductase. This enzyme converts the reduced thyrodoxine into oxidized thyrodoxine with the help of FADH2, which is converting into FAD, and this FAD is converting back to FADH2 with the help of NADH. Okay, DUMP can be converted to DTMP, which is in DNA with the help of thymidylate synthase. This thymidylate synthase enzyme converts N5N10 methyl tetrahydrofolate into dihydrofolate. This dihydrofolate is converted back to the tetrahydrofolate with the help of enzyme dihydrofolate reductase, which is inhibited by methotrexate drug, which is an anti-cancer drug. Okay, the disease which is caused by the defect in the two enzymes of this pathway, that is OPRTase and OMP decarboxylase is orotic aciduria, in which there is accumulation of orotic acid which leads to the formation of crystals and blocks the pathway of urine. Okay, this was all about the nucleotide pyrimidine biosynthesis by the de novo pathway. The salvage pathway is of pyrimidine is same as that of the purines. Okay, in the next video we will discuss about the purine biosynthesis and purine catabolism and purine anabolism both. If you like this video, hit the like button, subscribe my YouTube channel.